Okay, so good morning everyone. Last class we discussed about the empirical formula and ways of empirical formula and different numerics of empirical formula, and I hope you people have understood that. Today we start the new topic which is called limiting reagent. Okay, today we start the new topic which is called limiting reagent. What is limiting reagent? Now see, in limiting reagent का concept, first you have to check that whether to form some compound that much amount of reactant is required or not. So limiting reagent means reagent or reactant that limits the amount of products. Limiting reagent is the reactant or reagent that limits the amount of the products. Now what are the sums? Now till now whatever sums you have done, all you have got directly a question. How many moles will be formed from this? What will happen when this will react? How much oxygen will be obtained from this? So you have got a direct question. Limiting reactant sums may you have a statement first. Limiting reactant sums you have a first statement. For example, this is a sum of limiting reactant. 3 gram of hydrogen reacts with 29 gram of oxygen. Statement. To form water according to 2H2 plus O2 gives you 2H2. एक स्टेटमेंट दे देगा. अगर स्टेटमेंट दे देगा ना तो समझ जाना कि वो एक लिमिटिंग रिएक्टेंट का सम है. डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नहीं पूछ के एक स्टेटमेंट दिया उसके बाद क्वेश्चन पूछा तो यू रिमेंबर दैट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट का सम. फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन द रिएक्टेंट इन एक्सेस मींस लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट व्हिच इज एक्सेस एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड. समटाइम्स दिस इज नॉट देयर. दे डायरेक्टली टेल this gram reacts with this much, calculate the amount of water formed. ये नहीं देता है. ये दे देगा तो you will understand that this is a limiting reactant का sum. If they give you this question, you will understand that this is a limiting reactant का sum. But if they don't give this line, अगर statement देके निकालने बोला तो समझ जाओ कि ये limiting reactant का sum है. क्योंकि direct अगर पूछेगा ना तो statement नहीं बोलेगा. Now you have to solve this question. So first I will check that whether this statement is true or false. मतलब they told me that 3 gram of hydrogen reacts with 29. I will check that whether 3 gram of hydrogen really needs 29 or not. ये चेक करना होता है limiting reactant में. You have to check. So I will check it. Where is my yeah? So I will check it. Okay. So now I write down the equation. 2H2 plus O2 gives you 2H2. So 2 2s are 4 and here 32. And this one you have 36. I don't. Now what you can write? 4 gram of hydrogen reacts with 32 gram of oxygen, the actual one. 4 gram of hydrogen reacts with 32 gram of oxygen, the actual one. Now I will check that 3 gram reacts with how much? They have told me 3 gram reacts with 29. लेकिन हम चेक करेगा कि 3 ग्राम के साथ कितना चाहिए. So 3 gram of hydrogen reacts with 32 by 4 into 3 gram of oxygen. 4 8s are 32, 8 3s are 24 gram of oxygen. Very good. Which means students, for 3 gram you need 24 gram of oxygen. इसका मतलब 3 ग्राम के लिए यूनिट 24 ग्राम. वो लोग बोल रहा है 3 ग्राम के लिए रिएक्ट करता है 29 ग्राम. नहीं चाहिए. I need only 24. I have 29, which means I can say oxygen is in excess. Oxygen is in excess by. Oxygen is excess. Excess by how much? You need 24 for 3. But they have given 29. So 29 minus 24, that is 5 gram. So which means 5 gram of oxygen is excess. Oxygen is excess. Now who is left? दो ही reactant है. ये excess हो गया. ये बचा. Therefore hydrogen is the limiting reactant. Like this we find out.
वेरी सिंपल, जो स्टेटमेंट दिया है उसको चेक करो, ओरिजिनल वाला लिख के उसको चेक करो कि वो उसके साथ रिएक्ट करता है कि नहीं। अगर रिएक्ट उतना नहीं चाहिए, हमारा कितना आया 24 आया, इसका मतलब दिया हुआ है ज्यादा। तो अगर दिया ज्यादा रहता है, इफ इट इज गिवन मोर, दैट बिकम्स एक्सेस, अदर वन बिकम्स लिमिटिंग रिएक्टेंट। और अगर चेक करने में तुम्हारा ज्यादा निकला, सपोज हियर आई वुड हैव बीन फाउंड 32 ग्राम ऑक्सीजन सपोज, और यहां पे अगर दिया होता वो लोग ज्यादा, सो उस केस में दिस विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट मीन्स फॉर 3 ग्राम they have given 29, but for 3 gram you have taken out 24, so you need less, so this is excess। बगल वाला हो जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, बगल वाला हो जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। लेकिन अभी सपोज तुमको बोला कि 3 ग्राम ऑफ रिएक्ट्स विथ 19 ग्राम, लेकिन तुम्हारा निकला 3 ग्राम रिएक्ट्स विथ 15 ग्राम, सॉरी सपोज 3 ग्राम के लिए चाहिए 21 ग्राम, सपोज तुम्हारा निकला इन एनी इक्वेशन फॉर 3 ग्राम इट्स 21, लेकिन तुमको चाहिए कितना 3 ग्राम मीन्स 19। तुम देखा है कि 3 ग्राम में 21 चाहिए, लेकिन तुमको दिया कम है। तो क्वेश्चन में अगर दिया कम है देन योर कैलकुलेशन दैट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, और अगर क्वेश्चन में दिया ज्यादा है देन योर कैलकुलेशन देन द ऑपोजिट वन विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट, रिमेंबर। सो नाउ क्या निकला हमारा, हाइड्रोजन is a limiting reactant, so oxygen is in excess, so the reactant which is excess we don't matter to see that, we see the limiting reactant. Now they have told to take out water, in the question they have told to take out water, we will take out the amount of water but on the basis of limiting reactant. So hydrogen is the limiting reactant, so 4 gram of hydrogen gives 36 gram of water. Therefore 3 gram of hydrogen will give 36 by 4 into 3 gram, that is 27 gram of water. This is the thing, understood? So which means product is always taken out after finding out the limiting reactant, because product depends on the limiting reactant. अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट का सम है तो प्रोडक्ट डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर में। एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट हाउ यू फाइंड आउट, अ स्टेटमेंट दे विल गिव इन द क्वेश्चन, you have to verify the statement that whether it is correct or wrong. If suppose it comes that the statement requires, I am helping you once more. Suppose they have given 2 gram of A reacts with 5 gram of B. This is statement given in the question. तो अगर तुम्हारा ऐसा आया 2 gram of A reacts with 7 gram of B, तुम्हारा ज्यादा आया, तुम्हारा 2 के लिए तुम्हारा 7 आया, लेकिन क्वेश्चन में है 5, कम है ना, तो अगर कम दिया है क्वेश्चन में तो वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। Therefore B is the limiting reactant. And now if it comes less, suppose 2 gram of A reacts with 3 gram of B. So 2 gram of A के how much you want? You need 3 gram, no? But question में दिया 5, ज्यादा है क्वेश्चन में, तो वो नहीं होगा, उल्टा वाला होगा। Therefore A is the limiting reactant. This is the question. And then उस A को पकड़ के जो निकालने बोले वो निकालें। This is the concept of limiting reactant. So I will give you some sums and I will give you some practice also in the Google Classroom. If you have any doubt, you can ask me. And today I could not conduct a Zoom session because actually I have to give my mobile to the service center for some problem. So you please try this. If any problem, you get back to me. Okay? Okay. Thank you very much. Stay safe, stay blessed, and
Have a good day. Thank you.